Hello बच्चों, let's read the question. Question में given है कि a driver in a car approaching a vertical wall notices that the frequency of his car horn has changed from 440 Hz to 480 Hz when it gets reflected from the wall. If the speed of the sound in air is 345 meter per second, then the speed of the car is. Okay. The question में given है कि let's say this is the car. Okay. So हमें इस कार का स्पीड फाइंड करना होगा. लेट्स से द स्पीड ऑफ द कार इज bc. Okay, and there is a vertical wall in front of it. So this is the wall. Okay, now question में given है कि his horn, the frequency of his horn changes from 440 to 480 after it gets reflected from the wall. So initially the frequency which is emitting from the car is 440 Hz. ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये साउंड आके इस वॉल पे टकरा रहा है, राइट. फिर वो रिफ्लेक्ट होके क्या हो रहा है, फिर से उस कार की तरफ जा रहा है. रिफ्लेक्टेड जो साउंड है वो जब फिर कार सुन रहा है उसको क्या सुनाई दे रहा है, दैट इज ऑफ 480 हर्ट्ज. ओके, दिस इज द रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ डबल डस, राइट. सो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. नाउ इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, that is apparent frequency, apparent frequency due to Doppler effect. Doppler effect. Now apparent frequency if dash is equals to if naught, that is incident sound frequency into velocity of sound minus of velocity of observer, that is VO, divided by velocity of sound minus of velocity of source, that is VS. Okay. Now यहाँ पर साइन कैसे डिटरमाइन करता है, दैट इज लेट्स से कि दिस इज द सोर्स एंड दिस इज आवर ऑब्जर्वर, राइट. नाउ साउंड सोर्स से ऑब्जर्वर के तरफ जाता है, सो साउंड के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव साइन मान लेते हैं एंड इंसिडेंट साउंड के डायरेक्शन के रिस्पेक्टिव में हम सोर्स और ऑब्जर्वर का वेलोसिटी का साइन डिटरमाइन करेंगे. ओके, सो द फ्रीक्वेंसी, लेट्स से कि f1 इज द फ्रीक्वेंसी of the car with respect to the wall. So F1 will be equals to F naught into C minus, इस केस में wall is the observer, so wall is stationary, that means VO will be 0. C minus velocity of the car, that is the source. now यहाँ पर सोर्स का वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द इंसिडेंट साउंड. नाउ लेट्स से कि after after the sound is reflected, let if double dash is the frequency heard by the driver after reflection.
after reflection. So if double dash square, this is f1 into c minus velocity of observer by c minus velocity of source. Okay. Now इस केस में source क्या है? That is the wall. So the wall is the source because the sound is reflected from the wall only. Okay. And इस केस में the car. So this is the car. Car क्या है? This is observer here. Right. So इस केस में observer का velocity that is VO is minus of VC. Right. क्योंकि sound wall से car के तरफ जा रहा है. Right. So as the car is moving opposite to the incident sound, that means velocity of the observer will be minus of VC. And velocity of the source is what? 0 because it is stationary. Right. So this is equals to F1 C minus of minus VC, that is C plus VC by C. Right. Now F1 का value हमने निकाला, that is F0 into C by C minus VC. So this equals to F0 into C by C minus VC into C plus VC by C. Right. Now C से C कट गया तो हम लिख सकते हैं कि F double dash is equals to F0 into C plus VC by C minus VC. Right. So F double dash by F1, sorry, F0 is equals to C plus VC by C minus VC. Now हमें F double dash और F dash का वैल्यू गिवन था. Right. So F double dash का वैल्यू क्या था? That is 480 and F dash is 440. So 480 by 440 is equals to C का वैल्यू क्या है? That is velocity of air. Velocity of sound in air is 345 meter per second. So this is equals to 345 minus VC by 3 sorry, plus VC by 345 minus VC. Right. This is equals to, so इसको हम 11 से जाएगा और इधर 12 से जाएगा. So this is equals to 345 into 12 minus of 12 VC is equals to 345 into 11 plus of 11 VC. Right. इसको solve करके हम पाते हैं कि VC is equals to 15 meter per second. This is equals to 15 into 18 by 5 kilometer per second. Okay. जो कि आता है कि VC is equals to 54 kilometer per hour. Okay. So हमारा कार का जो velocity होगा that is 54 kilometer per hour. Right. That means our option A is our correct answer. Do you understand it? Yes.